Hello guys, welcome back to my YouTube channel. So here in this video I'm going to discuss about schemas. There are mainly three kind of schemas. Star schema, okay, snowflake schema, and the next is a generalized schema. So can you just a second, can you explain me schemas and different type of schemas in simple word and different types of schemas in simple words. Schema is just the structure or blueprint of a data. It tells how the data is organized, the table exists. Schema, snowflake schema, galaxy, fact constellation schema, generalized schema. So यहाँ से सारा देखते हैं. Schema होता क्या है? Schema is just the structure or blueprint of a database. It tells how data is organized, what table exists, what columns they have, and how they are related. What tables exist, what columns they have, and how they are related. It tells how data is organized. Okay. हमारे database का एक blueprint होता है. So what is its schema? Schema is like a schema is just the structure or blueprint of a database. A schema is just a structure or blueprint of a database ये होता है मेरा schema. It tells you how data is organized, it tells you how data is organized, what table exists. So a schema is just a blueprint of a database. It tells us how data is organized, what table exists, what column exists, and how the columns are, how they're related, how tables exist, what columns exist, how they are related. Okay, so you can think of a schema like a plan or layout of your data. It is like a plan or layout of our data. Okay. So example, if you have a small shop database, your schema might look like if तीन table consider करते हैं. Let's suppose we have three tables, एक customer table, ठीक है, in which I have columns like customer ID, name and email, in which I have columns like customer ID, name and email. Okay, and then I have products table, in which I have column like product ID, product name and price. Product ID,
product name and price. Product ID, product name and price. Okay, and next I have orders table, in which I call like order ID, customer ID, product ID, date and quantity. Orders table, in which I have columns like order ID, customer ID, product ID, customer ID, okay, product ID, and then date and quantity, मतलब किस डेट पे ऑर्डर लिया था और कितनी क्वांटिटी में लिया था, ठीक है ना. So together these tables and their relationship form our database schema. Together these table and their relationship form our database schemas. इन तीनों को छोड़ दो. सो टुगेदर दीज टेबल्स एंड रिलेशनशिप फॉर्म अवर डेटाबेस स्कीमा. हम यहाँ से कंटिन्यू करते हैं डेटा वेयर हाउसिंग के स्कीमा से. सो टुगेदर these tables and relationships form our database schema. Okay. Star schema has one fact table and multiple dimension table. Dimensions are not normalized. Simple structure. ठीक है. Fast and easy for reporting. Star schema का point types of schemas in data warehousing. ये देखेंगे हम types of schemas in data warehousing. ओके, डेटा वेयर हाउसिंग में हमारे पास कितने टाइप्स ऑफ स्कीमाज होते हैं. ओके, वी विल सी दैट. सो फर्स्ट वी हैव वन स्टार स्कीमा. इसमें क्या होता है हमारे पास हैज़ वन फैक्ट टेबल. इसके पास एक फैक्ट टेबल होती है. Okay, example sales and multiple dimension table. Examples customer, product and time. Examples sales table and then customer, product and time. Example sales and dimension tables. Example customer, product and time. ओके, सो उसके बाद क्या है, उसके बाद है डायमेंशंस आर नॉट नॉर्मलाइज्ड. एक चीज़ और ध्यान रखने की जरूरत है कि इसकी डायमेंशंस जो होती है वो नॉर्मलाइज नहीं होती हैं. डायमेंशन टेबल्स आर नॉट नॉर्मलाइज्ड. And then fast and easy for reporting. It is fast and easy for reporting as well. Okay, and उसके बाद
एग्जाम्पल ये सेल्स को हमने फैक्टेबल ले लिया, कस्टमर प्रोडक्ट टाइम एंड ये अभी मैंने आपको बताया था ना कस्टमर प्रोडक्ट टाइम। तो एग्जाम्पल दिखा रही हूँ मैं इसका। सेल्स की जो मेरी फैक्टेबल है, सेल्स इज माई फैक्टेबल एंड देन ऑल माई डायमेंशन टेबल्स आर customer table, okay, and then product table, ये स्टार बन रहा है ना, टाइम टेबल एंड देन टाइम टेबल एंड रीजन टेबल, ठीक है, इस तरीके से। और स्नोफ्लेक स्कीमा में क्या होता है, think one central fact and surrounded by star dimensions similar to the star but dimensions are normalized, split into smaller related tables, save space but queries need more joins, ठीक है। डायमेंशंस इसमें नॉर्मलाइज नहीं होती, सिंपल स्ट्रक्चर होता है, तो मतलब डायरेक्टली फैक्ट टेबल से कनेक्टेड होती है स्टार स्कीमा में, और स्नोफ्लेक में वही है नॉर्मलाइज होती है, तो आपस में भी रिलेटेड होती है। तो नेक्स्ट विल कम टू स्नोफ्लेक स्कीमा। Next we will come to snowflake schema, okay, snowflake schema। So it's similar to star but dimensions are not normalized here. It is similar to this star schema but dimensions are normalized here. So it is similar to star schema but dimensions are normalized here, okay। saves space but queries need more joins, saves space, it saves space स्पेस को सेव करता है, saves space but queries need more join, okay, क्योंकि वही ना नॉर्मलाइज है, but queries need कि आपस में कनेक्टेड होती हैं, more join, ठीक है। इसके एग्जाम्पल में देख लो, sales fact, product dimension, category dimension, think star schema but with branches looks like a snowflakes। fact table इसमें भी एक ही होती है but इसमें dimension, fact table is one here but dimensions are connected to each other, not directly to the fact table। fact table is one only but here dimensions are connected to each other, not directly to the fact table, but here dimensions tables are connected to each other, not to the fact tables directly। okay, so stars फॉर एग्जाम्पल सेल्स फैक्ट, प्रोडक्ट डायमेंशन, कैटेगरी डायमेंशन। प्रोडक्ट में भी कैटेगरीज आ जाते हैं तो प्रोडक्ट टेबल कैटेगरी टेबल से भी जुड़ी हुई होगी प्रोडक्ट आईडी कॉलम के थ्रू। सेल्स फैक्ट, product dimension, and then we have category dimension, okay। इसके बाद गैलेक्सी या फिर फैक्ट कंस्टलेशन स्कीमा पे आ जाता है। इट हैज़ मल्टीपल फैक्ट टेबल दैट शेयर कॉमन डायमेंशन यूज्ड व्हेन यू हैव डिफरेंट बिजनेस प्रोसेस, एग्जांपल सेल्स एंड इन्वेंटरी यूजिंग द सेम डायमेंशंस, ओके। गैलेक्सी या फैक्ट कंस्टलेशन स्कीमा, मल्टीपल स्टार्स कनेक्टेड टुगेदर कॉल्ड गैलेक्सी।
मल्टीपल स्टार्स कनेक्टेड टुगेदर कॉल्ड गैलेक्सी. गैलेक्सी या फिर फैक्ट कॉन्स्टलेशन स्कीमा. नेक्स्ट इज गैलेक्सी और फैक्ट कॉन्स्टलेशन स्कीमा. गैलेक्सी और फैक्ट कॉन्स्टलेशन स्कीमा. ओके, सो इसमें क्या है मेरा, इसमें वी हैव for example has multiple fact table that share common dimensions. Has multiple fact tables that shares common dimensions. Next is point is used when we have different business processes. Example, sales and inventory. Used when we have different business processes. Used when we have different business processes. Example, sales and inventory are using the same dimensions. Okay, are using the same dimensions. ये कितने सारे हैं इसमें? बोल दे. ओके, तो एक बार आप गैलेक्सी या फैक्ट कॉन्स्टलेशन स्कीमा का एग्जांपल भी देख लो. एग्जांपल सेल्स फैक्ट एंड इन्वेंटरी फैक्ट. वी हैव sales fact table and then we have this inventory fact table, and all of these are connected to product dimension, customer dimension, time dimension. Product dimension, these dimension table, product dimension, customer dimension, and then time dimension, and then time dimension. एक लास्ट है हमारे पास, which is generalized schema. It is a flexible standardized schema that can hold data from many sources. Flexible standardized schema that can hold data from many sources. Generalized schema. It is a flexible standardized structure that can hold data from many sources. It is a flexible standardized structure that can hold data from many sources, that can hold data from many sources. Okay, it can hold data from many sources. Used in data lakes or harmonized layers to integrate data before analysis. Used in data lakes or harmonized layers to integrate data from before analysis. It is used in data lakes or harmonized layers
used in data lakes or harmonized layer to integrate data before analysis. डेटा को इंटीग्रेट करने के लिए बिफोर एनालिसिस. बेसिकली इट कैन होल्ड डेटा फ्रॉम मैनी सोर्सेज, यानी कि इंटीग्रेट. इट इज़ अ फ्लेक्सिबल स्टैंडर्डाइज स्ट्रक्चर. तो डेटा लेक इज ऑल्सो फ्लेक्सिबल एंड स्टैंडर्डाइज स्ट्रक्चर दैट कैन होल्ड डेटा फ्रॉम मैनी सोर्सेज. Instead, using data like harmonized layers to integrate data before it basically generalized schema. It is a flexible generalized structure that can hold data from many sources. It is used in data lake or harmonized layer to integrate data before analysis. Okay. सो दिट इज़ ऑल फॉर टुडे गाइस. ये डिफरेंस हमने देख ही लिया है. स्टार स्कीमा क्या होता है, ठीक है. एफिशिएंट स्टोरेज होती है, इससे फास्ट एनालिटिक्स होते हैं. इससे स्टोरेज एफिशिएंट हो जाती है, मेरी एनालिटिक्स फास्ट हो जाते हैं ना इससे. और इससे जॉइंट्स बढ़ जाएंगे, बट तो फास्ट एनालिटिक्स तो नहीं होंगे, बट स्टोरेज एफिशिएंट होगी. ये मल्टीपल प्रोसेसेस में यूज़ होता है. एंड इट इज़ टू हैंडल डाइवर्स डेटा. एक बार देख लेते हैं. यूज़ पता होने चाहिए बिकॉज यूज़ ऑफ स्टार स्कीमा, स्नोफ्लेक स्कीमा, फास्ट एनालिटिक्स. देखिए भैया, इसमें नॉर्मलाइज नहीं होती है टेबल जो होती है, तो इसलिए. और स्नोफ्लेक में नॉर्मलाइज होती है. स्टार स्कीमा का बेनिफिट क्या है? फास्ट एनालिटिक्स, ओके. स्नोफ्लेक स्कीमा का क्या है? एफिशिएंट स्टोरेज. एफिशिएंट तरीके से स्टोर करता है इसमें. स्नोफ्लेक स्कीमा का क्या है? एफिशिएंट स्टोरेज. एफिशिएंट स्टोरेज. और ये क्या है? गैलेक्सी इफेक्ट कॉन्स्टलेशन स्कीमा का यूज़ क्या है? यूज़ फॉर मल्टीपल प्रोसेसेस. ठीक है, जब मल्टीपल प्रोसेस हो रहे हैं, मल्टीपल प्रोसेसेस के केस में यूज़ होता है. मल्टीपल प्रोसेसेस के केस में यूज़ होता है. यूज्ड फॉर मल्टीपल प्रोसेसेस. क्या इसमें just a second, let me just pick a new one. Let me erase all this. उसके बाद में फिर से लिख देती हूँ. उसका क्या था हमारा जनरलाइज स्कीमा का? इट इज़ अ फ्लेक्सिबल एंड standardized structure that can hold data from many sources. Flexible and standardized structure that can hold data from many sources, like used in data lake or harmonized layer to integrate data from many sources before analyzing it. Flexible और कैसा? standardized structure है. वैसे लिख लेते हैं हम इसमें. स्टार स्कीमा का यूज़ क्या होता है मेरा? चलो ब्लू से लिख लेते हैं आज. फास्ट एनालिसिस के केस में, ओके. स्नोफ्लेक स्कीमा का यूज़ क्या होता है मेरा? एफिशिएंट स्टोरेज मैनेजमेंट के केस में. एफिशिएंट स्टोरेज मैनेजमेंट के केस में.
गैलेक्सी स्कीमा का क्या होता है? डेटा फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेज, राइट? मल्टीपल प्रोसेस हो जाता है ना, मल्टीपल प्रोसेसेस के लिए यूज़ होता है, यूज़ फॉर मल्टीपल प्रोसेसेस लाइक सेल्स, इन्वेंट्री एक्सेट्रा, यूज़ फॉर मल्टीपल प्रोसेसेस. एंड देन एफिशिएंट स्टोरेज मैनेजमेंट में ये होती है बिकॉज नॉर्मलाइज होती है ना टेबल, और ना स्टार की शेप में तो शेप मतलब जगह भी कम लेता है ना. एफिशिएंट स्टोरेज मैनेजमेंट क्योंकि नॉर्मलाइज होती है टेबल, और स्टार की शेप का कोई मतलब नहीं है. जनरलाइज्ड स्कीमा, मल्टीपल प्रोसेसेस हो सकते हैं लाइक सेल्स, इन्वेंट्री, डाइवर्स डेटा, इन्वेंट्री. ओके, और डेटा लेक यूज़ होता है मेरा हैंडल डाइवर्स डेटा को हैंडल करने के लिए हम जनरलाइज स्कीमा का यूज़ करते हैं. हैंडल्स डाइवर्स डेटा. ओके, so that is all for today guys. Now we'll meet in another video in another session. Until then, goodbye. Please do hit the like button, please share the video as much as possible, and please do subscribe to my channel. Thanks.